Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Clear and audible. Okay, thank you so much, sister. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. As you inhale, feel the freshness of the air. As you exhale, imagine any tension, any stress, any thoughts of the past leaving your body. Allow yourself to let go. Notice the thoughts that arise. Notice the memories that come up, but don't engage with them. Simply observe them and let them pass. You can't change the past, but you can choose to let it go. Feel the weight of the past lifting off your shoulders. Feel the freedom that comes with living in the present moment. Remember, the past is just a memory. It's not real. The present moment is all that exists. Stay here in this moment and allow yourself to let go of the past. Allow yourself to be free. Okay, thank you so much, everyone. So we'll begin with today's session. I'll just share the screen with you. Okay. So today we're gonna start with the ego search for wholeness, and this is page 46 in the PDF. It's the end of the second chapter. Okay. The ego search for wholeness. The another aspect of the emotional pain that is an intrinsic part of the ego mind is a deep-seated sense of lack or incompleteness, of not being whole. तो जो हमारे अंदर जो पेन है जो माइंड के अंदर जो ये कांस्टेंट एक फियर है एक इनकम्प्लीटनेस है वो है कि लैक ऑफ बीइंग होल मतलब कुछ इनकम्प्लीट सा फीलिंग है जो माइंड कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर बिल्ड अप करता है कि हम कंप्लीट नहीं है हमें कोई चाहिए कंप्लीट फील कराने को कोई हमारे साथ हो टू मेक अस फील फुलफिल्ड तो ये एक माइंड की बहुत बहुत ज्यादा
इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब बहुत डीप रूटेड है हमारे अंदर कि हम कंप्लीट नहीं है। ये जो ईगोइक माइंड है ये हमें बार बार इस फीलिंग का एहसास दिलाते हैं दैट कोई चाहिए हमें कंप्लीट करने के लिए। In some people, this is conscious, in others, unconscious. If it is conscious, it manifests as the unsettling and constant feeling of not being worthy or good enough. तो कईयों में ये ज्यादा होती है फीलिंग, और कईयों में इतनी नहीं होती। जिनमें ज्यादा ये फीलिंग है, जो ज्यादा कॉन्शियस है कि वो कंप्लीट नहीं है, तो ये कैसे मैनिफेस्ट करते हैं कि सारा टाइम उन्हें यही लगता है कि वो गुड इनफ नहीं है, उनको कुछ चाहिए कंप्लीट फील होने के लिए। And if it is unconscious, it will only be felt indirectly as an intense craving, wanting and needing. तो जिनमें ये मतलब इतने कॉन्शियस नहीं है वो इस फीलिंग को लेके, उनको क्या कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ क्रेविंग, कुछ चाहिए। सारा टाइम वो एक क्रेविंग सी रहती है अंदर। In either case, people will often enter into a compulsive pursuit of ego gratification and things to identify with in order to fill this hole they feel within. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हर किसी को ना वो चाहिए होता है कि कोई ना कोई उनको कहीं से वैलिडेशन मिले, और किसी चीज के साथ वो आइडेंटिफाई करे जिससे वो कंप्लीट फील करे। So they strive after possessions, money, success, power, recognition, or a special relationship, basically so that they can feel better about themselves, feel more complete. तो फिर हम सब क्या करते हैं, हम पैसे, सक्सेस, हमें लगता है अगर हम कुछ बन जाएंगे तो हम कंप्लीट होंगे। हम हमारी रिलेशनशिप, हम वी लुक फॉर समबडी एल्स टू मेक अस फील कंप्लीट। हम पार्टनर ढूंढते हैं अपने लिए। हमें लगता है कि जब तक हमारे साथ कोई नहीं होगा, हम कंप्लीट फील नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास पावर, पैसा, पोजीशन, possessions नहीं होंगे, तब तक हम complete नहीं होंगे। But even when they attain all these things, they soon find that the hole is still there, that it is bottomless. मतलब इन सब चीजों के होने के बाद भी वो इनकम्प्लीट फीलिंग जाती नहीं है। वो एक वो होल है जो फिल होता ही नहीं है, उसका एंड ही नहीं है। Then they are really in trouble because they cannot delude themselves anymore. Well, they can and do, but it gets more difficult. As long as the egoic mind is running your life, you cannot truly be at ease. You cannot be at peace or fulfilled except for brief intervals when you obtained what you wanted, when a craving has just been fulfilled. तो जब तक हम माइंड आइडेंटिफाइड होंगे, हम कभी भी एक, जैसे ऑथर कह रहे हैं ना, वी कांट बी ट्रूली एट ईज। कभी हम शांत, हम कंटेंट नहीं फील करेंगे। क्योंकि जब भी वो हम तभी कंटेंट फील करेंगे जब हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना हम वो वी फील फुलफिल्ड, कि हमें वो मिल गया। तब हम ब्रीफ, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, बीच 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 में brief intervals के लिए we feel, have that good feeling, but we are not constantly content. Since the ego is a derived sense of self, it needs to identify with external things. It needs to be both defended and fed constantly. The most common ego identifications have to do with possessions, the work you do, social status and recognition, knowledge and education, physical appearance, special abilities, relationships, personal and family history, belief systems, and often also political, nationalistic, racial, religious, and other collective identifications. None of these is you. तो इनमें से कुछ भी नहीं है हम, ना ये सोशल स्टेटस, ना ये अपीयरेंस, ना हमारे रिलेशनशिप्स, कुछ भी नहीं। बट ईगो इन सब चीजों से आइडेंटिफाई करती है खुद को, द ईगो माइंड।
डू यू फाइंड दिस फ्राइटनिंग? ऑथर पूछ रही, आपको ये डर नहीं लग रहा कि हम इसमें से कुछ भी नहीं है जिससे जिसके लिए हम सारी लाइफ लड़ते रहते हैं, एंड वी वांट टू बी समथिंग इन लाइफ? तो ऑथर कह रहे हैं इसमें से कुछ भी आप नहीं हो. और इज इट अ रिलीफ टू नो दिस? All of these things you will have to relinquish sooner or later. Perhaps you find it as yet hard to believe, and I am certainly not asking you to believe that your identity cannot be found in any of those things. You will know the truth of it for yourself. तो ऑथर कह रहे हैं कि ये तो सूनर और लेटर सब नो खत्म ही हो जाना है, ये सब रह जाना है यहीं पर. तो बट वही ऑथर कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग यू विल फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ. ये आप खुद रियलाइज करेंगे व्हाट द ट्रुथ इज. जब तक आप खुद नहीं एक्सपीरियंस करेंगे आपको नहीं बिलीफ होगा. You will know it at the latest when you feel death approaching. Death is a stripping away of all that is not you. The secret of life is to die before you die and find that there is no death. तो ये सब चीजें हम कब रियलाइज करते हैं कि हम ये रिलेशनशिप्स, ये पोजीशन, ये पावर, ये मनी, जो भी हमारे पोजीशंस है, हम इसमें से कुछ भी नहीं है. व्हेन डू वी रियलाइज? जब व्हेन वी फील डेथ इज अप्रोचिंग, जब हमें लगता है वी आर गोइंग टू ये लाइफ छोड़, इज गोइंग टू गो अवे, हम ये सब छोड़ के जाने ही वाले हैं. दैट्स व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग कि इसमें से कुछ भी नहीं है हमारा. बट ऑथर इज सेइंग द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई. इसका क्या मतलब? कि डाई फ्रॉम ऑल दीज possessions, all these things that we identify ourselves with, to uh, to become more soul conscious, to understand कि ये सब egoic mind को fulfill करने की चीजें. And none of this is us. We are complete within ourselves. हमें और कुछ चाहिए नहीं complete feel कराने के लिए. That is what it means when you die before you die. Die from all the possessions. Okay. Sorry. Okay, so now we'll continue with the next chapter. That's chapter 3, moving deeply into the now. Don't seek yourself in the mind. I feel that there is still a great deal I need to learn about the workings of my mind before I can get anywhere near full consciousness or spiritual enlightenment. तो जो सीकर है वो क्या कह रहा है कि अभी भी उसको लगता है उसको माइंड के बारे में बहुत कुछ समझना पड़ेगा, you know, to get into that full consciousness. अभी तक उसको माइंड का पूरा समझ नहीं आ रहा है. तो there's a lot he needs to learn. That's what the seeker is saying. तो ऑथर क्या कहता है उसको? No, you don't. The problems of the mind cannot be solved on the level of the mind. Once you have understood the basic dysfunction, there isn't really much else that you need to learn or understand. तो ऑथर क्या कह रहा है कि हमें माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये थॉट्स क्यों आते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाना. जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वी डोंट हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद आवर माइंड विद दीज थॉट्स, तो दैट इज ऑल वी नीड टू नो. उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि माइंड कैसे फंक्शन करता है. Studying the complexities of the mind may make you a good psychologist, but doing so won't take you beyond the mind. Just as the study of madness isn't enough to create sanity. You have already understood the basic mechanics of the unconscious state, identification with the mind, which creates a false self, the ego, as a substitute for your true self rooted in being. You become as a branch cut off from the vine, as Jesus puts it. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा माइंड की डिटेल में जाएंगे हम गुड अच्छे साइकोलॉजिस्ट तो बन सकते हैं,
but it won't take you, beyond the mind. जैसे ऑथर ने कहा कि स्टडी ऑफ मैडनेस isn't enough to create sanity. मतलब वो पढ़ने पढ़ने के ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है टू अंडरस्टैंड. तो बेसिक यही है कि माइंड से आइडेंटिफाई नहीं करना है. वी आइडेंटिफाई टू मच विद आवर माइंड, जो एक फॉल्स सेल्फ है, ईगो है. तो मेन हमें यही एक चीज ध्यान में रखनी है. The ego's needs are endless. It feels vulnerable and threatened, and so lives in a state of fear and want. Once you know how the basic dysfunction operates, there is no need to explore all its countless manifestations, no need to make it into a complex personal problem. The ego, of course, loves that. It is always seeking for something to attach itself to in order to uphold and strengthen its illusory sense of self, and it will readily attach itself to your problems. तो ऑथर यही समझा रहे हैं कि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये माइंड में ये ऐसे क्यों हो रहा है. क्योंकि ईगो को तो ये बहुत पसंद है, दैट वी कीप थिंकिंग एंड कीप थिंकिंग अबाउट द थॉट्स एज वेल. तो बस यही हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो माइंड क्रिएटेड है इसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ. This is why, for so many people, a large part of their sense of self is intimately connected with their problems. Once this has happened, the last thing they want is to become free of them. That would mean loss of self. There can be a great deal of unconscious ego investment in pain and suffering. जो इतने सारे लोग जो अपने प्रॉब्लम से इतना आइडेंटिफाई करते हैं, वो फिर उससे दूर भी नहीं होना चाहते, क्योंकि उतना वो उनको लगता है कि दे लूज देयर सेल्फ बिकॉज वो इतने ज्यादा आइडेंटिफाइड है अपनी ईगो माइंड से. So once you recognize the root of unconsciousness as identification with the mind, so the root of unconsciousness क्या है? That we identify ourselves with our mind, which of course includes the emotions. You step out of it. You become present. When you are present, you can allow the mind to be as it is without getting entangled in it. तो हमें ये नहीं सोचना कि ये थॉट क्यों आया, ये ऐसे क्यों, क्यों आ रहे हैं मुझे ये थॉट्स. हमें बस उसको ऑब्जर्व करना है. वी जस्ट हैव टू डिटैच आवरसेल्फ. जब हमने ये रियलाइज कर लिया है कि माइंड के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, बस वी जस्ट हैव टू स्टेप आउट एंड बिकम प्रेजेंट, जैसे ऑथर कह रहे हैं. एंटैंगल नहीं होना है थॉट्स में. The mind in itself is not dysfunctional. It's a wonderful tool. Dysfunction sets in when you seek yourself in it and mistake it for who you are. It then becomes the egoic mind and takes over your whole life. तो बेसिक डिसफंक्शन क्या है, ऑथर समझा रहे हैं कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड से, हम सोचते हैं जो भी ये थॉट्स, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस सब मैं हूँ, तब वो क्या होता है, वो माइंड कंट्रोल कर लेती है हमारा लाइफ. इट टेक्स ओवर. Okay, end the delusion of time. It seems almost impossible to disidentify from the mind. We are all immersed in it. How do you teach a fish to fly? तो जो सीकर है वो ऑथर से कह रहे हैं कि बहुत इट फील्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने सालों से, इतने जन्मों से हम इतना माइंड से आइडेंटिफाइड है. तो अब बहुत मुश्किल लगता है उससे डिटैच करना, ऑब्जर्वर की तरह देखना हमारे थॉट्स को. तो ऑथर समझा रहे हैं, हियर इज द की, एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम. टाइम एंड माइंड आर inseparable. Remove time from the mind and it stops, unless you choose to use it. To be identified with your mind is to be trapped in time. तो ऑथर का कहना है कि जो टाइम है, जो ये पास्ट और फ्यूचर है, उसको अगर हम निकाल दें, तो देन वी कैन बिकम प्रेजेंट. तब हम
डिसआइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने माइंड से. The compulsion to live almost exclusively through memory and anticipation. तो जब हम अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम टाइम में ट्रैप्ड है, तब हमें वो है कि जो मेमोरी है, जो पास्ट में हुआ है और जो होने वाला है, उसके उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं. This creates an endless preoccupation with past and future and an unwillingness to honor and acknowledge the present moment and allow it to be. The compulsion arises because the past gives you an identity and the future holds the promise of salvation or fulfillment in whatever form. Both are illusions. तो ऑथर कैसे समझा रहे हैं कि टाइम इज एन एक्चुअली एन इल्यूजन, क्योंकि हम पास्ट में सोच रहे होते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, इट्स नॉट रियल. या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो भी रियल नहीं है. तो टाइम जो है वो इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे माइंड में. तो वही ऑथर समझा रहे हैं कि जब हम ये पास्ट और फ्यूचर से डिसआइडेंटिफाई करेंगे, देन वी कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग द माइंड, देन वी कैन स्टार्ट disidentifying and staying in the present. But without a sense of time, how would we function in this world? There would be no goals to strive towards anymore. I wouldn't even know who I am because my past makes me who I am today. I think time is something very precious and we need to learn to use it wisely rather than waste it. तो सीकर ऑथर से पूछ रहा है कि दुनिया कैसे चलेगी, हाउ विल द वर्ल्ड फंक्शन अगर टाइम नहीं होगा, कोई गोल्स भी नहीं होंगे. और ये भी हम जैसे हम भी बहुत इस बात से रिलेट करते हैं ना कि हम सोचते हैं जो मैं आज हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई पास्ट. तो सीकर भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑथर से. और फिर वो कहते हैं कि उनके हिसाब से टाइम तो बहुत प्रेशियस है और हमें उसे वाइजली यूज करना चाहिए. तो ऑथर समझा रहे हैं, टाइम isn't precious at all because it is an illusion. What you perceive as precious is not time, but the one point that is out of time, the now. वाह, ये कितना इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करना चाहिए इस लाइन को. कि जो हम प्रेशियस सोचते हैं, हम कहते हैं टाइम इज सो प्रेशियस, बट टाइम में क्या प्रेशियस है? द मोमेंट नाउ, दैट इज व्हाट इज प्रेशियस. That is precious indeed. The more you are focused on time, past and future, and the more you miss the now, the most precious thing there is. The more you are focused on time, अगर हम past और future को में ज्यादा focus करेंगे, हम अब now में तो है ही नहीं ना. तो the most precious is what? The present, not time, not past and future. Why is it the most precious thing? Firstly, because it is the only thing. It's all there is. The eternal present is the space within which your whole life unfolds. The one factor that remains constant. Life is now. This is very important to understand. Ki it is all now. Rest, past, future is just an illusion. There was never a time when your life was not now, nor will there ever be. Secondly, the now is the only point that can take you beyond the limited confines of the mind. It is your only point of access into the timeless and formless realm of being. तो जितना हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे, जितना हम पास्ट और फ्यूचर के से अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करेंगे, उतना हम अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच पाएंगे, आवर ट्रू बीइंग, which is timeless, which is formless. Nothing exists outside the now. Aren't past and future just as real, sometimes even more real than the present? After all, the past determines who we are, as well as how we perceive and behave in the present. And our future goals determine which actions we take in the present.
तो सीकर क्या पूछ रहा है ऑथर से कि वो कह रहा है कि पास्ट और फ्यूचर भी तो रियल है, पास्ट में भी जो हुआ है वो भी रियल है, उससे हमें सेंस ऑफ सेल्फ हम डिराइव करते हैं, और फ्यूचर में जो होने वाला है उससे हम अपने प्रेजेंट गोल्स बनाते हैं। तो अभी ऑथर समझा रहे हैं, यू हैवंट येट grasped the essence of what I'm saying because you are trying to understand it mentally. The mind cannot understand this. Only you can. Please just listen. तो जो ये माइंड आइडेंटिफाइड जब हम माइंड आइडेंटिफाइड होते हैं हमें ये सब बातें नहीं समझ में आती कि प्रेजेंट में क्यों रहना है। तो वही ऑथर समझा रहे हैं, बिकॉज ये माइंड नहीं समझेगा ये सब बातें। इट्स द सोल, जब हम सोल कॉन्शियस होके जब हम अपने हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम ऑब्जर्वर होंगे अपने थॉट्स के, जब हम डिस आइडेंटिफाई करेंगे माइंड से, देन वील व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट, देन वील अंडरस्टैंड। हैव यू एक्सपीरियंस्ड, डन, थॉट or felt anything outside the now? Do you think you ever will? Is it possible for anything to happen or be outside the now? The answer is obvious. Is it not? तो कुछ हो सकता है जो जो हम सोच रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। Nothing ever happened in the past. It happened in the now. Nothing will ever happen in the future. It will happen in the now. What you think of as the past is a memory trace stored in the mind of a former now. When you remember the past, you reactivate a memory trace, and you do so now. तो जो भी हम कर रहे हैं हम अब कर रहे हैं। अगर हम पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, अब एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट सोच रहे हैं, और पास्ट में जो है वो तो हो गया, इट्स डन, वो सिर्फ एक मेमोरी है। और फ्यूचर के बारे में भी सोचना, वो भी हम अब सोच रहे हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। The future is an imagined now, a projection of the mind. When the future comes, it comes as the now. When you think about the future, you do it now. Past and future obviously have no reality of their own. तो जो भी हम कर रहे हैं वो हम इस प्रेजेंट मोमेंट पे कर रहे हैं, चाहे हम पास्ट का सोच रहे हैं चाहे हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। इट इज ऑल इन द माइंड। Just as the moon has no light of its own, but can only reflect the light of the sun, so are past and future only pale reflections of the light, power, and reality of the eternal present. Their reality is borrowed from the now. The essence of what I'm saying here cannot be understood by the mind. The moment you grasp it, there is a shift in consciousness from mind to being, from time to presence. Suddenly, everything feels alive, radiates energy, emanates being. Okay. The key to the spiritual dimension. In life threatening emergency situations, the shift in consciousness from, from time to presence sometimes happens naturally. तो जब कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तब क्या होता है, तब हम पास्ट और फ्यूचर से हट के प्रेजेंट में आ जाते हैं। The personality that has a past and a future momentarily recedes and is replaced by an intense conscious presence, very still but very alert at the same time. Whatever responses is needed then arises out of that state of consciousness. The reason why some people love to engage in dangerous activities such as mountain climbing, car racing, and so on, although they may not be aware of it, is that it forces them into the now, that intensely alive state that is free of time, free of problems, free of thinking, free of the burden of the personality. तो क्यों लोग
डेंजरस एक्टिविटीज करते हैं जो जैसे कार रेसिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, बंजी जंपिंग, जो भी है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें इट फोर्सेस देम टू बी इन द नाउ, बिकॉज जब वो उस स्टेट में होते हैं उनके माइंड में और कुछ नहीं चल रहा होता है। तो तभी वो उस पे करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट आउट ऑफ द बर्डन जो भी उनके माइंड में इमोशनली ट्रॉमा चल रहा है। दे वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट एक्सपीरियंस दैट मोमेंट. Slipping away from the present moment, even for a second, may mean death. Unfortunately, they come to depend on a particular activity to be in that state. But you don't need to climb the north face of the ego. You can enter that state now. Since ancient times, spiritual masters of all traditions have pointed to the now as the key to the spiritual dimension. Despite this, it seems to have remained a secret. It is certainly not taught in churches and temples. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि पहले से ही स्पिरिचुअल मास्टर्स जो है अ, वो ये इस चीज पे पॉइंट कर रहे हैं कि जो भी है वो अब है, दे हैव आल्सो अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नाउ. बट इट्स स्टिल, वही ऑथर कह रहा है, बट अभी भी एक वो सीक्रेट लगता है, क्योंकि ये हमें कोई मंदिरों में या चर्चेस में तो ये सब चीजें नहीं सिखाते. If you go to a church, you may hear readings from the Gospel, such as, "Take no thought for the morrow shall take thought for the things of itself," or, "Nobody who puts his hands to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." तो ये सब चीजें जो जो ये सब ग्रंथों में जैसे कहते हैं लिखी हुई है, जैसे बाइबल में ये लिखा हुआ है, बट कोई भी इसको समझ के समझा नहीं पा रहा है. नोबडी इज टीचिंग दिस टू अस. जैसे चर्चेस में, मंदिरों में हम जाएं, बट इस बात को कोई इट्स लाइक सीक्रेट है. नोबडी इज opening up and explaining these things to us. Or you might hear the passage about the beautiful flowers that are not anxious about tomorrow, but live with ease in the timeless now, and are provided for abundantly by God. The depth and radical nature of these teachings are not recognized. No one seems to realize that they are meant to be lived and so bring about a profound inner transformation. तो ये सब जब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, दैट वो तो सब दे आर नॉट वरीड अबाउट द टुमारो, दे लिव इन द नाउ, एंड दे आर प्रोवाइडेड बाय गॉड. तो ये सब टीचिंग्स हमें समझाई नहीं जाती है यूजुअली. तो it's important to understand that we have to live in the present. And this is not being taught in any churches, but this is actually what has been written as well. The whole essence of Zen consists in walking along the razor's edge of now, to be so utterly, so completely present that no problem, no suffering, nothing that is not who you are in your essence can survive in you. In the now, in the absence of time, all your problems dissolve. Suffering needs time, it cannot survive in the now. The great Zen master Rinzai, in order to take his students' attention away from time, would often raise his finger and slowly ask, "What at this moment is lacking?" तो ये क्वेश्चन ना हम सबको अपने आप को पूछना चाहिए जब भी हमें लगता है हम इमोशनली ड्रेन है, या कोई चीज हमें बॉदर कर रही है, या ओवर थिंकिंग हो रही है. तो दिस क्वेश्चन वी कैन ऑल आस्क आवरसेल्फ, व्हाट एट दिस मोमेंट इज लैकिंग. अभी इस वक्त क्या कमी है, व्हाट इज देयर दैट इज नॉट with me at this particular moment. A powerful question that does not require an answer on the level of the mind. It is designed
to take your attention deeply into the now. A similar question in the Zen tradition is this: if not now, when? अगर अब नहीं तो फिर कब? The now is also central to the teaching of Sufism, the mystical branch of Islam. Sufis have a saying, the Sufi is the son of time present. And Rumi, the great poet and teacher of Sufism, declares, past and future wheel God from our sight, burn up both of them with fire. तो ये सूफिज्म में भी यही टीचिंग्स है जो द ग्रेट पोएट रूमी है जिसके हम पढ़ते भी हैं बहुत उसके जो सेइंग्स हैं तो उसने भी कहा कि पास्ट एंड फ्यूचर से हम वी कांट फील गॉड्स एसेंस हम गॉड को फील कर ही नहीं पाते हम वो प्रेजेंट में रह के सोल कॉन्शियस रह के वी कांट फील सुप्रीम सोल्स पावर till the time we are in the past and future. So Mr. Eckhart, the 13th century spiritual preacher, summed it all up beautifully. Time is what keeps the light from reaching us. There is no greater obstacle to God than time. Wow. So we'll end over here. तो कल फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Accessing the power of now. Okay, so आज के जो questions हैं हाँ, ओके तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ओरिजिन ऑफ फियर हाउ डज इट अफेक्ट यू एंड टेक कंट्रोल ओवर यू तो जो फियर है उसका वो कहाँ से मतलब कहाँ से आता है और कैसे हमें कंट्रोल करता है Second question, what does the author mean when he says an intrinsic part of the egoic mind is a deep-seated sense of lack or incompleteness? तो इसका क्या मतलब है ऑथर जब कहते हैं कि जो ईगोइक माइंड है उसका जो मेन एसेंस है वो क्या है कि इट्स नॉट कंप्लीट तो ऑथर का क्या मतलब है जब वो ये स्टेटमेंट कहते हैं and the third question is, according to the author, the study of madness isn't enough to create sanity. What is he suggesting by this? Is there still a great deal we need to learn about the workings of the mind? तो ऑथर इसको इसमें कहते हैं कि हमें और भी बहुत कुछ सीखना है माइंड को समझने के लिए तो ये सब हमने आज डिस्कस किया तो इसके क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या आप कमेंट सेक्शन में भी यू कैन आंसर so thank you so much for joining today and we'll see you all tomorrow. Thank you. Thank you.